मुझे गर्व है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित भाई शाह जी तथा सामाजिक न्याय मंत्री और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी और अर्जुन राम मेघवाल जी ने इस समाज के भावनाओं को सम्मान करते हुए इस विधेयक सदन के सम्मति हेतु रखा गया है। इस विधेयक का महत्व है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। सच्चा लोकतंत्र समावेशिता पर निर्भर करता है। गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को पुनः समायोजित करके हम ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। यह कदम हमारी अनुसूचित जनजातियों को वह मंच प्रदान करेगा जिसकी उन्हें ज़रूरत है, ताकि वे अपने चिंताओं को व्यक्त कर सके, नीतियों को आकार दे सके और गोवा के भविष्य को प्रभावित कर सके। प्रतिनिधित्व केवल संख्या का मामला नहीं है, यह इस बात का आश्वासन है कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों से जुड़े मुद्दे को विधायी चर्चाओं में उचित स्थान मिले। अनुसूचित जनजातियां अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और भूमि अधिकारों से संबंधित विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है। बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए लक्षित और प्रभावी नीति हस्तक्षेप सुनिश्चित करेगा। हमारा संविधान समानता और सकारात्मक कार्रवाई के सिद्धांतों का आत्मसात करता है। यह विधेयक उन मूल्यों का प्रमाण है। यह हमारी उस वादे के साथ मेल खाता है जिसमें हमने विधायी संस्थाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे शासन में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा मिले। गोवा की विकास यात्रा तब तक अधूरी है जब तक कि इसमें हमारे अनुसूचित जनजातियों के सक्रिय भागीदारी न हो। पर्याप्त प्रतिनिधित्व यह सुनिश्चित करेगा कि विकास परियोजनाओं, संसाधनों के आवंटन और उनकी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण से संबंधित निर्णयों में उनकी आवाज़ सुनी जाए। यह राज्य में संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है। माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक केवल संख्याओं का पुनः समायोजन नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र की ताकत पर विश्वास को पुनः व्यक्त करने का अवसर है। आज़ादी के बाद से निरंतर उपेक्षित जनजातीय समुदाय को देश की मुख्य धारा में शामिल करना मोदी जी सरकार की गारंटी थी, जिसे पूर्ण किया जा रहा है। यह उन लोगों के साथ खड़े होने की प्रतिज्ञा है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से नज़रअंदाज किया गया और उन्हें अपने भविष्य को आकार देने का अधिकार देने का संकल्प है। गोवा एक छोटा राज्य है, लेकिन इसकी भावना विशाल है। आज इस विधेयक का समर्थन करके हमारे पास यह दिखाने का अवसर है कि हम हर समुदाय, हर परंपरा और हर आवाज़ को महत्व देते हैं। मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से इस ऐतिहासिक कानून का समर्थन करने का अनुरोध करता हूं। अंत्योदय विचारधारा के यशस्वी कार्यान्वयन की दिशा में यह निर्णय एक पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा। अंत में मैं यह दोहराना चाहता हूं कि यह विधेयक केवल एक प्रक्रियात्मक सुधार नहीं है, यह गोवा की अनुसूचित जनजातियों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसलिए इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करें और यह संदेश दे कि हमारा लोकतंत्र समावेशिता और न्याय के स्तंभों पर मजबूती से खड़ा है। धन्यवाद सदानंद जी। श्री सुभाष चंद्र बोस पिल्ली, विस्तृत व्याख्या करी उन्होंने। Honorable Deputy Chairman sir, thank you sir. I rise to discuss the readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the state of Goa Bill 2024, a landmark piece of legislation aimed at addressing the long-standing non-representation of scheduled tribes in Goa's political framework. The bill introduces innovative legal strategies to overcome constitutional constraints, ensuring that the democratic promise of inclusivity is fulfilled.
The major achievement of this bill is that it represents the transformative approach to political representation in Goa. This bill brings fundamental charges by creating reserved seats in the Legislative Assembly, ensuring that the voices, concerns and aspirations of these communities are not just heard, but are central to the governance process. It is comprehensive intervention that goes beyond the symbolic representation, promising genuine political empowerment and a pathway to meaningful participation of Goa's democratic framework. While the readjustment representation of the scheduled tribes in assembly constituencies of the State Goa Bill 2024 is a significant milestone in addressing the underrepresentation of scheduled tribes. It is important to acknowledge the address some inherent challenges in its framework. Sir, despite safeguards such as Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention Atrocity Act in 1989, incidents of atrocities against SCs and STs continues to be a common occurrence. In 2022 alone, 52,866 cases of atrocities were reported, highlighting the gap between the policy intent and the ground reality. The issue underscores the inefficiency of the protective laws in preventing violence and the continuing vulnerability of marginalized communities. This bill also highlights the critical need for an undated nationwide census to address the issue of accurately determining the composition of India's population. The last census was conducted in 2011 and its data is now over a decade old. The delayed 2021 census has created a vacuum in reliable population statistics, as without prices data, decisions such as constituency delimitation and resource allocation risk being based on outdated figures, potentiality leading to inequalities and inefficiencies in representation. I urge the government to urgently complete the delayed census, and it is not a statistical exercise, but also it is the foundation of the governance shaping policy decisions that affect every citizen. In conclusion, this bill is a significant setup towards political inclusion for scheduled tribes in Goa. However, its success depends on overcoming certain fundamental issues that requires our immediate attention to ensure effective representation for all marginalized communities. With these comments and suggestions, I support this bill, sir. धन्यवाद. Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 11th August 2025 passed the following bills. 1. The National Sports Governance Bill 2025 and 2. The National Anti-Doping Amendment Bill 2025. I lay a copy each of the said bills on the table. Shri Niranjan BC. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. The readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the State of Goa Bill 2025. Sir, Article 332 of the Constitution clearly provides for the reservation of seats for the scheduled tribe in state assemblies based on percentage of population of scheduled tribe communities. Sir, in Goa, the scheduled tribe population is 1,49,275, which accounts for about 10.23% of the state's total population. The majority of ST communities in Goa are Gauda, Kunvi, and Velip tribes. They are concentrated in South Goa, particularly in the assembly constituency of Sangam, Kwepem, Kanakona, and Dharbandora. Sir, the total number of MLA seats is 40.
Out of 40 assembly constituencies, the scheduled tribes of Goa will get 4 seats according to Article 332 of Constitution of India. After passing of this bill, out of 40 MLA seats, 4 seats will be reserved for scheduled tribe of Goa. The ST communities will get an opportunity of democratic participation in the Goa Assembly. Sir, in the state of Odisha, the PESA Act 1996, which has been enshrined for the protection, preservation and development of scheduled tribe and also for the self-governance of scheduled tribes, has not yet been implemented properly. And secondly, according to Article 243D, which meant for the reservation of seat for scheduled tribe in Panchayat Raj institutions like Gram Panchayat, for the seat of Sarpanch, Samiti member and block chairman. That has been de-reserved. So, I urge the Government of India to look after this, and Article 243 Clause D of the Constitution of India should be restored. Sir, in our state of Odisha, the Anvesha program, according to Right to Education Act, the ST/SC, poor SC/ST students are allowed to study free of cost in the private English medium school. Our former Chief Minister Sri Naveen Patnaik ji had implemented this scheme under Right to Education Act. Poor ST/SC students are studying free of cost in English medium schools. But during this session, sir, the admission has been stopped. So I request the government to implement, to allow the ST/SC student to continue study. Out of 100 ST communities and parts of our group within the ST communities, which has been recommended by our former Chief Minister Sri Naveen Patnaik ji, these communities which has been wrongly left out has not yet been included. So I urge the government to include the left out ST communities and parts of a group within such ST communities in the list of scheduled tribe in respect of the state of Odisha. Sir, in the state of Odisha, the heinous crime against ST women, girl students of school and colleges and universities are increasing day by day. मानस जी से आपका समय हो गया। Thank you, sir. धन्यवाद। श्री संतोष कुमार पी, नॉट प्रेजेंट। श्री अर्जुन राम जी मेघवाल टू रिप्लाई द डिस्कशन। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। पहले भी दिया है। पहले भी दिया और आप बार बार दें, अच्छा लगता है। आपने राजस्थान विधानसभा में भी बहुत शानदार काम किया और आप यहाँ देश की जो हैं, हम स्टेट के भी हैं लेकिन राज्यसभा में भी आप सभापति तालिका में तो बहुत शानदार काम कर ही रहे हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं। सर, भारत देश का विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। इस बिल पर माननीय 3 सदस्यों ने अभी विचार प्रकट किए, माननीय सदानंद तनावड़े और श्री सुभाष चंद्र बोस पिल्ली और निरंजन बिशी जी ने। कुछ विषय गोवा विधानसभा से संबंधित आए और कुछ इस बिल से संबंधित भी नहीं थे। जैसे मैंने कहा, हजारों वर्षों से सिंचित लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रेरणा से विविधतापूर्ण ये देश आज लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्र भारत में इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद को मजबूत करने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के मूल्यों को समाहित किया गया। इसी श्रृंखला में संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में और अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं में SC/ST वर्ग के लिए जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया। लेकिन गोवा में एक विशेष स्थिति उत्पन्न हुई
गोवा विधानसभा में 40 सीटें हैं, एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, उनकी संख्या 25,494, लेकिन एसटी के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं, क्योंकि 2001 की जनसंख्या के अनुसार उनकी जनसंख्या 566 रिकॉर्ड की गई, लेकिन 2003 में एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई। 3 में गोवा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में 3 नए समुदाय कुणबी, गावड़ा और वेलिप को शामिल कर लिया। जब शामिल किया और 2011 में जब जनगणना हुई तो एसटी समुदाय की जनसंख्या 1,94,275 हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये बिल लेकर के आए हैं जिससे जो 40 विधानसभा की सीटें हैं गोवा विधानसभा में, उसमें अनुसूचित जनजाति के समुदाय का प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं हो, वो उनको भी प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो अनुसूचित जनजाति के लोग जो गोवा में बड़ी संख्या में हैं और उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं ये बिल लेकर के आया हूं। आपसे अनुरोध है कि इसको सर्वसम्मति से पास करें। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री महोदय। The question is that the readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the state of Goa Bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of bill. Clause 2 to 8 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 2 to 8 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Sri Arjun Ram Meghwal to move that the bill be passed. Honorable Chairperson, sir, I move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. Special mentions Shri Ajit Madhavrao Gopchade. धन्यवाद सभापति महोदय। My subject is concern over जो लिखा है वही पढ़ेंगे। हाँ उतना ही पढ़ रहा हूँ जी। Concern over adverse impact of excessive use of mobile phones by children in India. भारत में बच्चों के बीच मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग एक गंभीर समस्या बन चुका है। इस आदत का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्मार्टफोन का अधिक उपयोग चिंता, अवसाद और चिड़चिड़ापन उत्पन्न कर सकता है। यह कम उम्र में ही डायबिटीज का कारण बन सकता है। इसके परिणाम स्वरूप मोटापा भी बढ़ सकता है, हृदय की सेहत कमजोर हो सकती है, कम उम्र में बुढ़ापे के लक्षण और बालों का सफ़ेद होना शुरू हो सकता है। लड़कियों में हार्मोनल परिवर्तन भी हो सकते हैं। बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हटकर मोबाइल पर केंद्रित हो जाता है, चर्चा नहीं करें आपस में, जिससे उनकी सीखने की क्षमता में कमी आती है। लंबे समय तक मोबाइल का उपयोग करने से आंखों में समस्या, नींद की कमी और मानसिक तनाव बढ़ता है। बच्चों के मोबाइल उपयोग को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है ताकि उनका विकास सही दिशा में हो सके। इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए केरल के स्थानीय पुलिस ने
1.5 साल पहले DDED केंद्र स्थापित किए। डिजिटल डी एडिक्शन कार्यक्रम बच्चों को अत्यधिक मोबाइल उपयोग से बचाने का प्रयास कर रहा है। माता पिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्क्रीन पर बिताए गए समय के लिए कुछ नियम बनाए जाए। बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने और नियंत्रण के लिए पढ़ाई, खेल और अन्य गैर डिजिटल गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों को साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू करना जरूरी है। मेरी सरकार से यह मांग है कि इस विषय पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जाए। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री have already settled in different parts of Manipur. Ministry of Home Affairs already asked states and the Union Territories to detect, identify and deport illegal Myanmaris and Bangladeshis within 1 month with effect from 19 May 2025, but no concrete steps are seen taken up from state government till date. Sir, conducting a census operation before the settlement of illegal immigrant issues will cause social unrest in the state, and it will also be a forfeiture of constitutional rights for indigenous Manipuris to carry out delimitation process based on that proposed census. Sir, census data is a very important document for planning and implementation of developmental works and for future delimitation process. Above all, census report of 2001 and 2011 of Manipur are very controversial and countered from many angles due to abnormal increases of population, but no rectification in this regard is made so far. In 3 subdivisions of Senapati district, Manipur, an extraordinary quantum jump of population growth around 202.88% were recorded in between 2001 and 2011 census, enclosed as table number 1. And also census report of 1991 and 2001 show 40% abnormal increase of population in several subdivisions of Manipur, enclosed as table number 2. Sir, considering all these facts and figures, I urge upon the Union government to detect, identify and deport the illegal foreign nationals fast based on 1961 as cut year before conducting census and delimitation process. Thank you, sir. धन्यवाद। श्री संतोष कुमार पी, नोट प्रेजेंट। श्री ब्रिजलाल। Thank you, Deputy Chairman, sir. My subject, demand for facilities for police personnel posted with minister MPs outside Parliament House. Police personnel posted with minister and MPs, etc., are not allowed to enter Parliament complex as a matter of policy. These police personnel keep on sitting in the open outside the Parliament complex and also have to face extreme weather conditions without any formal sitting cover area for them. They have no place to go for toilet even during medical emergency, as there is no relief arrangement for them. I would urge for making some immediate arrangement for deployment of some AC mobile vehicles with inbuilt toilet arrangement to provide these police personnel some physical, mental and medical relief. These mobile vans can be deployed at all working gates on the need-based basis. These police personnel who protect minister, MPs, etc., and provide security to them needs care and protection. There is a need to come to their rescue and provide them the said relief immediately. I urge the government to look into it. Thank you, Chair. श्री राघव चड्डा, नोट प्रेजेंट। डॉक्टर के लक्ष्मण।
Thank you, sir. This is a subject concern over constitutional and developmental invisibility of denotified, nomadic, and semi-nomadic tribes, DNTs. I wish to draw the attention of the government towards one of the most deprived and historically marginalized communities, that is the denotified, nomadic, and semi-nomadic tribes. It is estimated their population has reached 25 crore today. These communities have long history of resistance against foreign invaders and British rule. However, the colonial regime unjustly labeled them as criminal tribes under a series of legislation. Though the Criminal Tribes Act was repealed in 1952, these communities have remained excluded from the constitutional framework ever since, with no dedicated article, no mention in any schedule, and no category in reservations. Due to their nomadic culture, these people have no permanent housing, education, or any health care. Under Modi's government, 44,000 of them have been benefited from the Scheme for Economic Empowerment of DNTs, that is SEEDS, scheme by the present government. Still, many of them remain at the margins and are systematically invisibilized. I urge the government to include a separate column for DNTs in the upcoming caste-based census. This critical step will provide necessary data for evidence-based policy making and help ensure justice, recognition, and development for these long neglected citizens of a democracy, and also to consider to form a dedicated DNT, NT, SNT commission as recommended by the Dada Idate Commission. Thank you, sir. धन्यवाद. Dr. Sikandar Kumar, concern over problems of adulteration in food items. Sir, my special mention is on concern over problem of adulteration in food items. उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान भारत में खाद्य पदार्थों में मिलावट की एक गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। भारत में खाद्य पदार्थों में मिलावट सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता अधिकारों के लिए एक गंभीर खतरा बन गई है। कोई भी खाद्य पदार्थ मिलावट के अवैध कारोबार से अछूता प्रतीत नहीं पड़ता है। आजकल बाज़ार में हल्दी में पीली मिट्टी, पीला एनिलिन डाई, मेटानिल जैसे गैर अनुमत रंग, काली मिर्च में पपीते के बीज, मिर्च पाउडर में लाल रंग, ईंट पाउडर, बालू, रोडामाइन, मसालों में बुरादा, कैंसरकारी कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड, दाल चावलों में कंकड़, देसी घी में वनस्पति तेल मिलाकर, आइसक्रीम में ब्लास्टिंग पाउडर, दूध और दूध से बनी वस्तुओं में मिलावट की आम बात हो गई है। बाज़ार में व्यापारी धड़ल्ले से मिलावटी खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं। उन्हें किसी कानून का कोई डर नहीं है। खाद्य पदार्थों में मिलावट देशवासियों के स्वास्थ्य और राष्ट्र को बड़ा नुकसान पहुंचाती है। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस मिलावट की समस्या को प्राथमिकता से देखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI को खाद्य सुरक्षा कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए व्यापक उपाय करने के निर्देश दिए जाएं, ताकि देशवासियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर जॉन ब्रिटास, नोट प्रेजेंट। श्री केसरी देव सिंह झाला। Thank you, Deputy Chairman, sir. So my subject is a demand for the establishment of a dedicated cadre for wildlife veterinary services. So I rise to draw the attention of the government to a matter of urgent national importance, which is the urgent need to establish a dedicated cadre for wildlife veterinary professionals within the forest departments across India. So India is home to some of the world's most iconic and endangered wildlife species, including and not limited to elephants, tigers, leopards, and rhinos. Yet, despite the increasing frequency of human-wildlife conflict and the growing need for specialized care in rescue, rehabilitation, and disease management, there is no dedicated cadre of wildlife veterinarians in most states. Existing veterinarians, sir, are often deputed from the animal husbandry department, leading to a loss of field experience and continuity in wildlife care. Sir, some states, such as the state of Madhya Pradesh, have taken progressive steps by creating a separate cadre for wildlife veterinarians. It is imperative that all states, especially those with high biodiversity and conflict zones, follow suit. So a dedicated cadre would ensure timely response to wildlife emergencies and conflict situations. It would ensure specialized training
in tranquilization, rescue, and rehabilitation. It would ensure disease surveillance and outbreak prevention in forest ecosystems, and also the long-term conservation through consistent veterinary support. Through you, sir, I urge the government to take immediate steps to formulate a national policy for the creation of a wildlife veterinary service cadre with appropriate budgetary support and training infrastructure. धन्यवाद. श्री नरेश बंसल. धन्यवाद उपसभापति जी. डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवर ब्रिजेज, अंडरपासेज एट ओपन रेलवे क्रॉसिंग्स इन उत्तराखंड. आज मैं एक अत्यंत गंभीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं. देश में रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है व आदरणीय प्रधानमंत्री जी की 11 वर्ष के सफलतम कार्यकाल में इसके निरंतर सुधार व सुदृढ़ीकरण व आधुनिकीकरण का कार्य चल रहा है, जो प्रशंसनीय है. पूरे देश में, विशेषकर उत्तराखंड में देहरादून व हरिद्वार जिले से बहुत सारी रेल निकलती हैं, जो लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करती हैं. बहुत सी रेलवे क्रॉसिंग हैं जो आज भी खुली हैं और जहां आम जनता है, जहां आम रास्ता है. इनमें से कई पर बैरियर सुविधा है, कई मानव रहित हैं. यहां पर दुर्घटनाओं की संभावनाएं निरंतर बनी रहती हैं. वह समय समय पर विभिन्न दुर्घटनाएं हुई भी हैं, जिसमें लोगों की जान माल की हानि हुई है. मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे रेलवे क्रॉसिंग पर एक अंडरपास या आरओबी बनाया जाए व देहरादून भंडारीबाग जैसे आरओबी अधूरे हैं, उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए, जिससे लोगों को सुविधा हो व भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को टाला जा सके. धन्यवाद. धन्यवाद बंसल सर. डॉक्टर फौजिया खान, नोट प्रेजेंट. श्री सदानंद महालू शेठ तानवड़े. धन्यवाद आदरणीय उपसभापति महोदय. My subject is demand for revival of Air India's Goa's London Gatwick flight. I rise to draw the attention of the government to a matter of deep concern affecting a large section of Goan community, particularly the Goan diaspora residing in the United Kingdom. On 21st July 2023, Air India commenced a much-needed direct non-stop flight EI 145146 between Goa's Manohar International Airport and London Gatwick Airport. This service was the first regular international route out of Goa and offered seamless direct connectivity to the United Kingdom. This direct link significantly eased travel for thousands of Goan living in the United Kingdom, including students, working professionals, senior citizens, and families. The Air India flight saved time and money by avoiding long and costly stopovers. However, since 21st June 2025, this crucial service has been suspended due to operational adjustment following the unfortunate Air India Flight 171 incident. While safety-driven decisions are both necessary and commendable, the prolonged suspension, now extending beyond a month, have severely disrupted the travel plans and caused widespread hardship among Goans passengers regularly traveling to the United Kingdom. Goans traveling to and from the United Kingdom are now left with limited and costly alternatives, often involving multiple transit, high fares, and long delays. Goa is not just a premier tourist destination, it is a state with deep ties to the Europe. This flight is not merely an inconvenience, it is a lifeline that connects Goan families, enables economic and cultural exchange, and supports both the diaspora and inbound tourism. I earnestly appeal to the government to take steps to resume the direct Air India service between Goa and London Gatwick at the earliest. Thank you, sir. धन्यवाद. श्री सुजीत कुमार जी. Sir, I rise to draw the attention of the government to the need for establishing a Dak Ghar Niryat Kendra, DNK in short, in Kalandi district of Odisha. Sir, I would like to thank and commend
our visionary Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the India Post for their Dak Ghar Niryat Kendra initiative, which has been opened in 1,000 locations across the country to facilitate international exports through its vast network. Approximately 18,000 exporters have been onboarded on the DNK portal. As per 2011 census, Kalandhi has a 28.5% tribal population, accounting for more than a quarter of the district's population, who are largely dependent on traditional and micro enterprises for livelihood. Yet they remain largely untapped in terms of access to wider markets. While Odisha currently has 35 operational DNKs, Kalandhi is yet to have even a single DNK, which hampers their access to international market. Kalandhi records an average of around 70 new MSMEs registrations annually. Since 2007 to 2015, 549 MSMEs have been established in the district, which will grow in the future for sure. So, sir, establishing a DNK in Kalandhi would directly support local artisans, SHGs, and small producers by giving them access to national and international markets. I therefore urge the government to prioritize Kalandhi for the next phase of Dak Ghar Niryat Kendra expansion, ensuring that the district's potential is not left untapped in the evolving export ecosystem. धन्यवाद सुजीत कुमार जी। श्री संत बलबीर सिंह, नोट प्रेजेंट। श्री महेंद्र भट्ट। महोदय, बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने को अवसर दिया है।